With Independence Day coming in on the 15th of August, once again the spotlight on that. A massive political row has erupted over civic bodies across the country ordering meat shops and slaughterhouses to remain shut on Independence Day. The opposition has described the ban as an act of food policing. The BJP and the opposition are locking horns yet again, this time over meat ban announced in many cities on Independence Day. A political row has erupted after several civic bodies ordered meat shops and slaughterhouses to remain shut on August 15th. Hyderabad MP and AIMIM chief Asaduddin Owaisi has slammed the Greater Hyderabad Municipal Corporation for directly closures on August 15th and 16th, which happens to be Krishna Ashtami. Owaisi called the meat ban a violation of citizens' right to liberty, livelihood, culture and religion. यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी, तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. And it is not just Hyderabad. Similar bans have been imposed in multiple districts across Maharashtra, including Shambhaji Nagar and Kalyan. Leaders across party lines have condemned the ban, calling it a crackdown on food habits. पहले अपनी सड़कें कैसी है, बिजली ठीक है क्या, पानी की व्यवस्था कैसी है, जनता को सुविधा कैसी मिल रही है, इन पे फोकस करें. जब ये सारी बातें उनको आती नहीं है, ठीक से आती नहीं है, तब क्या खा सकते हो आप, क्या पहन सकते हो आप, उस पे जाते हो. ये जो निर्णय है वो कोई नहीं मानेगा. जिसको जो खाना है वो खाएगा. ये स्वतंत्र दिन पे कोई हमें बता नहीं सकता कि आप क्या करें और क्या खाएं. The Maharashtra government, however, insists it has no intention of regulating food choices. Chief Minister Devendra Fadnavis claims this is not a new order and that such bans have existed since 1988. अशी बंदी घालणं बरोबर नाही, उचित नाही. आणि महत्त्वाच्या शहरांच्या मध्ये तर अनेक जाती धर्माची लोक राहत असतात. भावनिक मुद्दा असेल तर एक वेळ त्या दिवसापुरती बंदी किंवा आणखी काही काळापुरती बंदी घातली तर लोक एक्सेप्ट करतात. 15 ऑगस्टला अशी जर बंदी घालायला लागला तर उलट अवघडच आहे. सत्कार करत असताना मगाशी सोलापूरच्या बाबतीत BJP-LI and Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar has taken a different stand. He has criticized local bodies for what he calls an infringement on people's right to choose their food. या राज्य सरकारने असा कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. अनेक महानगरपालिकांना मी विचारलं की तुम्ही का असा निर्णय घेतला, त्यावेळेस त्यांनी 88चा GR मला पाठवला आणि त्यांनी हे देखील पाठवलं की दरवर्षी ते अशा प्रकारचा निर्णय घेत आहेत. So as this meat of the matter continues to sizzle, there are key questions that remain answering. And in the land of liberty, why our plates are being policed? Bureau Report, India Today.